Hi guys, welcome to my YouTube channel ICRL Python. Today I will launch the Python course in 13 days. Alright, ये एक हमारे पास 30 दिन के within 1 month you are able to write a code in Python program easily. And Python is a very strong language right now. So it's using your machine learning, in your deep learning, in your data science, and it is using robotics. So that's why you have to learn. So that's why everyone have to learn this language. So I will try to easy for everyone, for every basic learner, intermediate to advanced, for beginners to advanced. So you have to follow to my sales in Python within 13 days. So I will discuss first function is basically जो हम mostly use करते हैं, basic से start करेंगे from print functions, what's up print functions and what how we can use in print function in Python. It's very easiest. It's a very easiest to write a code in Python using a print functions. Okay, let's suppose first it's a very important thing for this Python. You have not import extra libraries and extra header files like C sharp, C++, and nothing. You have to simple write a print command and passing a string hello world. You see easily show that hello world as it is show कर देगा वो हमारे प्रिंट आउट फंक्शंस में. लेट्स फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट आउट करवाना है नंबर्स, तो वो किस तरह करवा सकते हैं. वो एज इट नंबर को प्रिंट आउट करवा देगा. और विदाउट अगर हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो इट मे बी शोइंग द एरर. No, it may not show error. So I'd give it a as it is print out. But if I have to print multiple of strings in one, so let's say showing easily print out function as it is. It's a very strong language. You have to like add two number. You see that add this number 2 plus 2 multiply 2 multiply by 2 2 divided by 2. So let's suppose what happened. Yeah, it's just only last command is not to run the other command. So I will discuss about for next video in next how we why not to print this series of questions. So I will check this. This is done easily. You see that everything is easily running in Python. So if we wanna print a number of series, Pakistan, comma, India and USA. What happened? Let's see. You see that it easily print out Pakistan, India, and USA. So this you see that it's a automatic space create between these. If I write, अगर हम चाहते हैं क्या करना है कि अगर हमारे पास जो प्रिंट आउट आ रही है प्रिंट जो फंक्शन हो उसके अंदर हम क्या करें कॉमा सेपरेट हो. ठीक है, हमारे पास जो प्रिंट आउट आए वो भी हमारे पास क्या है कॉमा सेपरेटेड आए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको एज इट इज प्रिंट आउट करवाएंगे और लास्ट पे हम क्या करेंगे SEP इज इक्वल टू लगा के हम कोटेशंस के अंदर कॉमा सेपरेट आ. तो ये देखेंगे तो हमारे पास उसने क्या कर दिया पाकिस्तान कॉमा इंडिया कॉमा US उसने एज इट इज प्रिंट आउट कर दिया. सेम थिंग को हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश के साथ. तो उसने क्या किया उसको फॉरवर्ड स्लैश के साथ रिप्रेजेंट कर दिया पाकिस्तान इंडिया USA
मोस्टली यूज़ होता है हमारे पास, जिसमें होता है डेट एंड टाइम्स को शो करवाने के लिए हमारे पास होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेट और टाइम्स के लिए क्या करेगा हमारे पास 10 January, right now I think so December is at 25 and year हम डालते हैं 2020 और let's suppose what yeah 25 December 2022, you see that is easily represent this format। और अगर हम चाहते हैं कि मल्टीपल ऑफ डाटा टाइप्स को हम किस तरह प्रिंट आउट करवा सकते हैं, वो भी हमारे पास बहुत इजी है। प्रिंट फंक्शन हम करेंगे, लाइक नेम दे दिया हमने और कॉमा के साथ हमने इसको क्या कर दिया 13 कॉमा नेम, उसका नेम आई थिंक इसको करते हैं अली। अली की जो एज है हमारे पास वो 30 है। अक्सर की जो हमारे पास एज है वो हमारे पास 20 है हमारे पास। और जो हमारे पास आमिर है उसकी जो हमारे पास एज है वो हमारे पास है 29। सो क्या करते हैं, लेट्स सपोज क्या था देखिए इसने हमारे पास अली इज 30, एक्सेस 20, आमिर इज 29 एज इट प्रिंट आउट करवा दें। और अगर हम इसको चाहते हैं कि जो हमारे पास जो ये एक लाइन में प्रिंट आउट करवा रहा, हमें एक लाइन में नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए एक बाय एक लाइन, यानी कि हमारे पास फर्स्ट अली का नेम और एज आए, फिर दूसरी लाइन पर हमारे पास अक्सा की नेम और एज, तीसरे पे हमारे पास आमिर का है। बहुत छोटा सा जो वेरिएबल हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सिंपल बैक स्लैश लगा कर हम एंड में प्लेस कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। और एज इट इज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉमा और बैक स्लैश के साथ एन को रिप्रेजेंट कर देंगे। और लेट्स सपोज क्या होता है, उसने क्या कर दिया अली अक्सर और आमिर को हमारे पास एज इट इज़ ने शो ऑफ करवा दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स या यहाँ से कॉमा हम ख़त्म करते हैं और इसको करते हैं एक सीक्वेंस में हमारे पास शो करते हैं उसको अली अक्सर और आमिर को एज इट इज़। ये हमारा था सिंपल सा छोटा सा प्रिंट आउट फंक्शन, ठीक है। चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।